इतना। हाँ बच्चे काम करते हैं इसके, ये सब ये सब वहीं पे काम से बनाते हैं वहीं पे। यहाँ जूम करके दिखा देना। और फिर उसके बाद जूस मिल आप जहाँ से देखें कैसे वहाँ से निकलना शुरू करेंगे, कितना ज़्यादा प्रेशर हाँ गैसी होती है, हल्की होती है। तो इसमें से जो वो गैसें निकलेगी ना, वो कार्बन प्लेट लगाएगी यहाँ पे। वो कार्बन प्लेट क्या करेगी, जो गैसें निकलेंगी उसमें जो हानिकारक कण होती है उसको अपनी तरफ आकर्षित कर लेगी। हानिकारक कण कौन चीज़? हाँ ये लाइक बना देना वीडियो। थॉमस के वीडियो आया है, ये नहीं है made up of tungsten metal, you know, X-ray that is only there. And when we are putting it here under this slide here, this you can see here. And then we are using like water droplets, that is distilled water or arrow water as a like lens. So it will work as a plano-convex lens. That is, one surface will be like plain and the other surface which will be a little bulging. So it will create a lens-like effect and will give a clarity while having visuals of these cells. So we have muscle cells over here, various types of cells like spirogyra and other things like algae which we are eating, like mushroom which we are eating. It is agaricus mushroom. But also I can show there. Can you tell me something about what is the use of this project in our daily life? In our daily life we can't, but we can see in the educational purposes. You know, in the rural areas we are not provided with the complex microscope which are provided in the urban areas. Yes. And it is also very costly. But I can understand that. Yeah, that's why. I was just find out to that what is the use of daily life? Daily life we can't. You can. It's for educational purposes. And so here the plano-convex lens which we are using, we can see this in the telescope also. But the difference is that हाथ टेढ़ा क्यों रखते हैं, बहुत गंदा आता है ऐसे। हाँ हमेशा नहीं, अलग ऐसे डिपेंड्स ऑन द यूज। ये पैटर्न से करेंगे तभी स्टार्ट होगा। बाहर फेंक खींचो ना, बाहर फेंक के लाओ तो उसको हम कैसे उसको पेटेंट कराया, उसको कैसे मतलब कि क्या कराया क्या पहले वो एक रिसर्च खुद गलत करना है यार। सोलर बेस्ड वायरलेस खा नहीं तब ना तुम लोग ले आओ।